Hello dear students and welcome to e-learning classes. Children, in civics today we will continue the same chapter, that is the state government. And in the state legislature we will study about some executive body, chief minister and council of minister. Children, in previous video I told you about that the governor appoints the chief minister and other ministers. So let us see how chief minister is appointed. Children, after the general election to the assembly, the governor invites the leader of the party that has won the majority. Children, election के बाद जो पार्टी मेजोरिटी से विन करती है उसके लीडर को गवर्नर इनवाइट करता है to form the government, and the leader of that party takes an oath as the chief minister. And after that, governor also take an oath in the council of minister on the advice of chief minister. Children, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के ऑफिसेस को संभालने से पहले गवर्नर इनको भी ओथ दिलाते हैं. ठीक है. देन चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट and performs more or less the same function in the state as those performed by the prime minister at the central level. The main function of a chief minister include the following: to advise the governor on the selection of council of minister and its size, to preside over cabinet meeting, to distribute portfolios among ministers, to appoint a deputy chief minister if needed, to retain charge of some portfolios if needed. So, as the head of the state legislature and council of ministers, chief minister holds the responsibility for the government of the state. Children, if a vote of no confidence against the government is passed in the assembly, then the entire ministry has to resign. देन ये चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो द होल मिनिस्ट्री हैज़ टू रिजाइन. नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चिल्ड्रन, टोटल स्ट्रेंथ जितनी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका 15% से ज़्यादा इसके मेंबर नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. सो ministers are chosen by the chief minister from among the legislature, and there are three categories of ministers at the state level: cabinet minister, minister of state and deputy minister. Children, cabinet minister जो है वो whole in charge देखता है. He was the in charge of one or more portfolios and may be assisted by the minister of state or deputy minister. The cabinet makes all important decisions. The council of ministers are collectively responsible to the legislative assembly. Next is civil services. Children, the decision of the ministers are actually executed by the officers of civil service, and these officers run the administration at the state level. Children, the Indian Administrative Services (IAS) and Indian Police Service are appointed at the state level. ये लोग स्टेट लेवल की को एडमिनिस्टर करते हैं. देन द स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन मींस PSC आल्सो सेलेक्ट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. ये भी बहुत सारे ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इन चार्ज हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं. देन चिल्ड्रन, द स्टेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें डिवीजन कहा जाता है, एंड दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द डिविजनल कमिश्नर, एंड दीज इन टर्न आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्टर करते हैं. नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल. चिल्ड्रन, एडवोकेट जनरल भी गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं एंड होल्ड्स एन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, और जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक ये ऑफिस में रहते हैं. Only a person qualified to be a high court judge is eligible for the post. Children, जो advocate general can take part in the proceeding of the state legislature but does not have the right to vote. Children, ये advocate general जो होते हैं वो legal matters को देखते हैं and performs other legal functions assigned by the governor.